Good morning, sir. Good morning. So we'll be doing structural fire protection. February, we've already completed for you everything. Structural fire protection was also in your phase one. So there'll be a repeat of the same thing. So structural fire protection is like what kind of structures you're supposed to have on ship for fire protection, which includes your fire bulkheads. So what is a non-combustible material? So that is defined as a material which will not burn or give off flammable vapors for self-ignition when heated to 750 degrees Celsius. And any other material which is other than non-combustible material is a combustible material. So if you heat it, it catches fire at 200. That is combustible material. So structural fire protection is the design and construction of a vessel for which we have to consider these points. One is division of the vessel into the various vertical boundaries, that is your bulkheads, and thermal and structural boundaries. So you're dividing the vessel into the various boundaries, basis, thermal, and structural boundaries. So you are trying to contain a fire with this. What kind of insulation you're going to have on that? B is a separation of accommodation spaces from the cargo spaces by thermal and structural boundaries. So the cargo space you are separating by thermal and structural boundaries and from the engine room space also. C part is restricting the use of combustible materials in construction. D part is containment and extinction of fire at the space of origin. So that means the fire, if it is originating in one of the holes, it is not supposed to spread because of your fire bulkheads. So that you're going to control the fire in the space of origin, so that otherwise fighting fire on spreading out will become very difficult. So contain it with structural and thermal boundaries. E is in case of any fire you're supposed to have means of escape. So protection of access for firefighting as well as means of access escape. So that means you will have those trunkways for fighting the fire as well as means of escape. F is the availability of your fire extinguishing appliances including fixed and portable. G is minimizing the possibility of ignition of flammable vapors. So that means that you're removing the heat so that the fire triangle is not successful. Either you're removing the heat, removing the oxygen, or removing the flammable vapor itself. So what are your fire safety objectives? The first is to prevent the occurrence of fire and explosion. So first thing is, if there is a fire, extinguish it. If there is an explosion, contain it. Number two is reduce the risk to life caused by fire. So the property might be damaged, but first thing is you have to try to save life and then save the ship. Reduce the risk of damage caused by fire to the ship and cargo and environment. Contain, control, suppress fire and explosion at the point of origin, that is the compartment of origin. You're trying to suppress, contain, and control the fire. Providing your means of escape for passengers and crew so that they'll not be harmed. So those were the fire safety objectives. So you were asked all these in your exam. What are the structural fire protection? What the fire safety objectives? Explain that. Now we come to the standard fire test. Now standard fire test basically is a test of your bulkheads and part of deck, so that you can conclude of what is your A type bulkhead, B type bulkhead, and C type bulkhead. So in a standard fire test, you're exposing the part of section of your bulkhead and deck, including a joint in a furnace,
where your various ordinates of furnace are these, and that you plot in the graph to form a standard time temperature curve. So let me start from here and then we'll come back. So a standard time temperature curve is defined by a smooth curve drawn through the following temperature points above your initial furnace temperature. So when you're heating in the furnace, you will have an initial furnace temperature maybe of 50 degrees. So above that, what temperature to be reached? So at the end of 5 minutes, so on your x-axis, you will have time period of 5 minutes. So in x-axis, your time period of 5 minutes. So y-axis, your temperature is 576 plus 50 degrees. What is the initial temperature? So 576 plus the initial temperature at the end of 5. So you'll be somewhere here at the end of 5 minutes here, the first ordinate. Second ordinate is your at the end of 10 minutes 679 plus 50. So that will be 10 minutes is somewhere here, 679 plus 50 somewhere here. So you're coming to this point. At the end of 15 minutes, 738 plus 50. So at the end of 15 minutes. So 15 minutes is somewhere here. 738 plus 50 is almost 800. So you're reaching this point. At the end of 30 minutes, 841 plus 50. So 30 minutes is 841 will be somewhere higher here. 841 plus 50 will be uh, 900 almost. So almost here it will be there. Then at the end of 60 minutes is 945 plus 50, so 995. So almost here it will be. So when you join the coordinates, then you get a smooth graph. That is a standard fire temperatures test graph. So this you have to draw in your exam. Plus you have to write about these ordinates. This you have to write in your exam. What are the temperature after how many minutes? Now we come to standard fire test. Basically in this your specimen, a prototype. You're not cutting your deck or bulkhead, but a similar characteristic thickness of steel. Part of bulkhead, part of deck exposed in for test furnace to temperature corresponding approximately to your standard time temperature curve. And your specimen or your test piece should resemble your intended construction of your deck and bulkhead, and you should have at least one joint in that test piece, and that specimen or test piece should have an exposed area of 4.65 square meters, because one section will be exposed, one section will be unexposed. So the exposed area will be 4.65 square meter and the height of that specimen should be at least 2.44 meters. You have to write all this in standard fire test. Entire thing. You have to write entire thing along with the graph. Now, basis your standard fire test, we will divide our bulkheads into A class, B class, C class fire bulkheads. So A class bulkheads are divisions formed by bulkheads and decks which comply with the following. They should be constructed of steel or equivalent material. They should be having suitable stiffening. Now, what is a stiffening? You might have forgotten about stiffeners and all, which you've done in second mates. So let me show you what are stiffeners. So suppose this is the bulkhead.
strips of steel fitted here to take the weight and take the pressure will be your stiffeners. These are your stiffeners which stiffen the plating. Another drawing I've made. Suppose this is a stringer there, then these are the vertical stiffeners here. So it can be vertical or it can be horizontal stiffener. So you can have a horizontal stiffener, you can have a vertical stiffener. This is a stringer plate. So these are the stiffeners. So it should be suitably stiffened. The third important point is it will prevent the passage of smoke and flame to the end of 1 hour standard fire test. That means for 60 minutes, it is going to prevent the passage of smoke and flame both. So the insulation should be on this kind of bulkhead with an approved non-combustible material. And the condition of this insulation is such that the average temperature of the unexposed side, that is the point where your fire is not there. What is an unexposed side? Example, the fire is number 1 hold. So your unexposed side will be the forward section of number 2 hold is unexposed side. So the fire is there, the bulkhead is trying to control the heat. So the unexposed side, the temperature, average temperature, so if about 10 points you're taking, the average temperature will not rise 140 degrees above the original temperature. So if you've got A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K points you're taking, and you make an average of it, the temperature will not be more than 140 degrees above original temperature. So if your temperature is 50 degrees original temperature of that hold, then the average temperature of all the points included will not be more than 140 plus 50. And if you have individual points, then the temperature at any individual point, including a joint of the unexposed area, should not rise more than 180 degrees above original temperature. So if your original temperature is 50, so it will be 180 plus 50. Now what are these conditions for the unexposed side temperature rise? One is 60 minutes. So this temperature rise will be contained for 60 minutes by A60 bulkhead. The above temperature rise will be contained for 30 minutes by A30 bulkheads. Above temperature rise will be contained for 15 minutes by A15 bulkhead. And A0 means 0 minutes. That means after the initial start, the unexposed side temperature is going to rise. It cannot control that temperature rise. All A60, A30, A15, A0, all these type of bulkheads are going to control the passage of smoke and flame for 60 minutes. The only difference among all these are about the unexposed side temperature rise. So A60 is going to contain that temperature rise for 60 minutes, A30 for 30 minutes, A15 for 15 minutes, and A0 cannot control the temperature rise. Hope everyone has understood, especially your April batch. February batch का तो repeat हो रहा है. Yes, sir, understood. ECS. हाँ, क्योंकि फेज 1 में लोगों ने समझा नहीं होता है, फिर दोबारा समझाना पड़ता है. और ये गलत कर देते हो. जब आ जाते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन A60 एंड A0, तो लोग लिख देते हैं A60 will stop the passage of smoke and flame for 60 minutes, A0 will not stop the passage of smoke and flame. तो जीरो हो जाता है. All the three are going to control the passage of smoke and flame. The only difference is temperature rise of the unexposed side. ठीक है. Now these are your A class bulkheads. कहाँ A30 दिया है, कहीं A0 दिया है, कहीं A60 दिया है.
चलो एक पॉइंट ले लेते हैं A0 ये ले लेते हैं. So this means that control station connected with number 6 accommodation spaces of minor risk are A0. Now let us take A60. So the control stations connected with areas which have got flammable liquids will be A60. Now certain areas are marked A30A, so A will be the footnote given in that sheet. What is A? That's a footnote special consideration of this area in A30. Okay, so this kind of table you will find in the solus also. Similarly, A0A, so there are footnotes given there. So ये table उसी तरह से है. So you can understand how this table has been made. Why those bulkheads are A0, certain are A15, certain are A30, certain are A60. Now we come to B class divisions. So the B class divisions are formed by bulkheads, decks. So these two were common of A. The additions are ceiling and linings. Those are added things. So they prevent the passage of flame only. That means when the fire starts, the smoke will start passing through that passing below the bulkhead. But the flame is not going to pass for 1 hour, half an hour of standard fire test. So it is going to control the passage of flame for 30 minutes. B class. Constructed or approved non-combustible material, including all materials which is used for erection except for combustible veneers. In here, what about the unexposed side? So the insulation will be such that the average temperature of unexposed side, average temperature will not rise more than 140 above original temperature. But for any individual point, this temperature rise will be 225 above original temperature as compared to A class bulkhead which was 180 degrees above original temperature. Here the time listed will be B15 which will control for 15 minutes this temperature rise, B0 which is going to control, which is not going to control the temperature rise. Temperature is going to rise immediately after fire of the unexposed side. So here you have similarly the table made B15 is corridors connected with 7 accommodation space on a moderate fire risk, so that's B15. Similarly, B0 is accommodation spaces connected with accommodation space of greater fire risk is B0. So similarly, your bulkheads are given. Then we'll come to your C class divisions. Let me show you if any diagram is there. So this I had drawn for what is unexposed side and exposed side. So if the fire is here and this temperature is 40 degrees, so this is the exposed side, and this area which is the other side of the bulkhead is unexposed side. So the temperature rise will be above the original temperature which is 40 degrees here of the unexposed side. Just to make you understand what is exposed and what is unexposed. Now we come to the third type. The third type is your C class divisions. So these are the divisions formed by bulkheads, decks, ceiling and lining as B class. And they are constructed or approved non-combustible material including all material used for erection with exception of combustible veneers. But in C class division, you do not have any requirements regarding the passage of smoke and flame. So the smoke and flame is going to pass through underneath these bulkheads. Plus the unexposed side temperature rise will be there immediately. It is not going to control the temperature rise.
So it is neither is going to control the passage of smoke, flame, or temperature rise. So combustible veneers may be permitted provided they meet the other requirements in this. And B, the combustible linings or veneers were not permitted. So that is the fire bulkheads. Now we come to what are fire doors. So these are the fire doors which can automatically shut after your fire alarm. So these are installed to control access to compartments and passageways, but they are not designed to fight your fire. So closed fire door will not prevent the spread of fire, but some amount of spread can be done prevented till you can control the fire. So the doors are remote closing mechanism and will close instantly when your fire alarm will sound. Now we come to fire dampers. Now the guys who were in the PLCCs or tankers, they've gone in pump room. They might have seen those wires hanging with certain weights below your duct of ventilation. So those were basically a fusible wires which are creating tension of the dampers. So your damper basically is going to shut off your ventilation in case of fire. So it has to be a stiffened steel plate, 3.2 mm thick, and they should be within the ventilation duct connected to fusible link. Fusible link is basically a thin wire which will melt at between 74 to 100 degrees Celsius in case of fire and maybe pump room or maybe in funnel, and it's going to close the damper because the weight is already there. So when it melts, the tension is removed and the damper will close. So the damper was opened with tension. So when it melts, it will close instantly, cut off your ventilation. These dampers can be operated manually also. They can be operated with pneumatic controls also. But in case of fire, you might forget it. So your dampers are connected with fusible wire that will automatically shut off when your temperatures are between 74 to 100 degrees in that compartment. That is going to melt that fusible wire and shut off your damper. So it is not going to prevent a fire, but it will prevent a fire from spreading, and it will also block your heat, smoke and flame because it is going to cut off your oxygen supply. So here you have fire dampers in your funnel. Pump room dampers की तो photo मिली नहीं, so I put on photos of funnel vent dampers here. So now we have finished all these. So we will be starting with your midship sections now. Before starting midship section, I want to show you a certain film, a video on your uh, structural components on a ship, which you might have forgotten when you're done second mates. Just recall what are your structural components, because midship areas, all your structural components will be there.
You'll not have sound, but I'll give a commentary on this. So this is your keel plate which has come up. This is continuous plating for an arc. So that's your keel plate. The bottom plate is coming up. This is the bottom plating. Then the bilge plating is coming up. This is your ship's hull or side plating. Now because this is a DB tank, so your watertight floor plating will be there. So this is a plate floor which is watertight, and in between your DB tanks, that means between your one port and two port, in the longitudinal direction, this kind of watertight floor will be placed in your thwartship direction. So this watertight floor will be placed in your thwartship direction. There will not be any holes here. Now this is your solid plate floor, but this is non-watertight. Here you have lightning holes for reducing your lightship weight of the ship. Then you have manholes which are elliptical. Now ये क्वेश्चन आपके पास काफी बार ओरल में पूछा जाता है, ये एलिप्टिकल क्यों होता है? ये तो चलो ये गलत बनाया हुआ है, राउंड बनाया है, बिकॉज एनिमेशन जो बनाया है वो राउंड बनाया है, बट दिस हैज टू बी एलिप्टिकल. तो एलिप्टिकल क्यों होता है भाई? ये ओरल का क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है. व्हाई इज दिस एलिप्टिकल? व्हाई नॉट राउंड? elliptical shape. Why not square? Why not square? सर मैन एंट्री के अच्छा मैन एंट्री करने के लिए, ठीक है. अब स्क्वायर क्यों नहीं है? स्क्वायर क्यों रस्सी नहीं है? भी पहन के करेगा ना सर सर क्योंकि अगर अरे स्क्वायर भाई होगा पहला स्ट्रेसेस. सुन लो. स्क्वायर इसलिए नहीं है, रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि कॉर्नर पे स्ट्रेस आ जाएगा तो डिसकंटिन्यूटी sir. स्ट्रेस क्रैक हो जाएगा सीधा, इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है. अब उसमें है राउंड क्यों नहीं है और एलिप्टिकल क्यों है? राउंड और एलिप्टिकल दोनों स्ट्रेस कम करते हैं. राउंड से स्ट्रेस इतना ज्यादा कम नहीं होता जितना एलिप्टिकल में कम होगा. दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट क्या हो गया? एससीबीए पहन के राउंड में हम फंस सकते हैं, लेकिन एससीबीए पहन के अगर एलिप्टिकल होगा तो टेढ़े होके हम इसमें से घुस सकते हैं. ठीक है, अब तीनों पॉइंट पता लग गए. तो ये तो सेकंड मेट Yes, तो sir. ओरल का है, बट मेट पे पढ़ सकते हैं भाई. सर क्यों होगा? क्या क्यों क्यों होगा? सेकंड पॉइंट सर, ये स्क्वायर और एलिप्टिकल का स्ट्रेस इसका. अच्छा चलो भाई, अभी आप लोग का सब डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि आप लोग की स्टडी डिसकंटिन्यूस होगी ना. कोई लोग भाई 3 साल के बाद एग्जाम दे रहे हैं, वो सेकंड मेट सब भूल गए, है ना. कुछ लोग 3 साल के बाद एग्जाम दे रहे हैं, कोई 4 साल के बाद दे रहा है, तो सेकंड मेट वाला पोर्शन तो भूल जाओगे. चलो मैं एक्सप्लेन ड्रॉ करके बताता हूँ. ऐसा है बेटा कि अगर मेरा ये जहाज है, ठीक है, तो मैंने अगर हैच ऐसे काटा, क्योंकि मैं इलिप्टिकल राउंड तो बना नहीं सकता ना हैच को, तो इलेक्ट्रिकल राउंड नहीं बना सकता, तो मैंने इसको रेक्टेंगल काटा है ताकि मैं इसे कार्गो डिस्चार्ज करूं. नहीं तो इलेक्ट्रिकल राउंड करूंगा इसको तो कार्गो फंस जाएगा. तो मेरे क्या होगा, यहाँ क्रैक आ जाएंगे, ये वाले पोर्शंस में क्रैक आ जाएंगे. इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस. ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होता है क्योंकि यहाँ आपके क्रैक बन जाते हैं. अब क्रैक बन जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे आपकी पतंग होती है ना, ये आपको पतंग दिखा रहा हूं, ये आपकी पतंग है. ठीक है, अब पतंग में आपकी एक तीली यहां से जाती है और एक तीली आप यहाँ लगाते हो, ऐसी तीली लगाते हो ना, पतंग में तीलियां लगती है. फिर एक कागज की चेपी यहाँ लगाते हो ना कागज. पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई? यस सर सेम. कागज लगाते हो, तो कागज जो है वो गसेट प्लेट का काम करती है. तो सपोज मेरे एक मेंबर्स हैं, यहाँ एक ऐसा मेंबर है जो ये जा रहा है, ठीक है, गर्डर है सपोज, और एक बीम है, तो बीम मेरी ऐसी जा रही है. तो मैं
इधर में क्रैक हो जाएगा जॉइंट पे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है। 90 डिग्री कहीं भी एंगल बना वहां क्रैक हो जाएगा। तो क्या किया मैंने ऐसी एक प्लेट लगा दी, यहां एक प्लेट यहां लगा दी। अब ये प्लेट लगाने से क्या, इसको मैंने रिवेट कर दिया। रिवेट करने से सपोज मैंने ये रिवेटिंग कर दी, यहाँ 2 रिवेट लगाए, यहाँ जगह नहीं मिल रही, मैं एक एक ही लगा रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये जो प्लेट है इसको कहते हैं गसेट प्लेट। तो ये क्या करती है, इट इज स्प्रेडिंग योर स्ट्रेसेस ऑल थ्रू दिस प्लेट, तो यहाँ क्रैक नहीं होगा। तो अगर मैंने इसको तो राउंड बना नहीं सकते, तो क्रैक हो जाएगा। तो क्योंकि वी हैव टू डिस्चार्ज कार्गो, उसके लिए हमने ये एक अटैचमेंट लगा दिया सो दैट यहाँ क्रैक नहीं हो। अगर सपोज हमारा ये कहाँ गया, हाँ, ये मेरा सॉलिड प्लेट फ्लोर है, मैंने इसमें अगर ऐसे रेक्टेंगल्स बना दिए तो वहां क्रैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कॉर्नर्स पे क्रैक हो जाएगा। तो मेरे तो बॉटम प्लेटिंग के ऊपर वो जोर पड़ेगा और सारा कोलैप्स हो जाएगा, जहाज डूब जाएगा। ऐसे कुछ भी कार्गो लोड किया तो यहाँ तो पूरा ही क्रैक हो जाएगा ना, स्ट्रेस पूरा फैल जाएगा तो क्रैक हो जाएगा। तो जब क्रैक हो जाएगा फिर तो आपका पर्पस खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि इसमें 2 तरीके कर सकते हैं। या तो हमने राउंड किया, तो लाइटनिंग होल तो हमने राउंड कर दिया, लाइटनिंग होल से तो कोई घुसेगा नहीं। लाइटनिंग होल लाइटन करने के लिए, कोई लाइट फेंकने के लिए नहीं। कुछ आंसर लोग देते थे कि लाइटनिंग होल से लाइट फेंकी जाती है। अरे भाई, कोई लाइट नहीं फेंकी जाती, वो हल्का करने के लिए लाइटनिंग है, नॉट लाइटिंग, लाइटनिंग है। अब मैंने अगर यहाँ राउंड कर दिया, सपोज ये राउंड किया, अब आप सब तरफ से तो सेम है डायमीटर, आप एसयू पहन के घुसोगे, बड़ा मोटा बंदा है वो तो फंस जाएगा, तो निकल ही नहीं सकता। चाहे टेढ़ा हो सीधा हो, इससे नहीं निकल सकता। तो तरीका क्या है बेटा, अब आपको कभी भूलोगे नहीं। मैं को इस तरह से समझा रहा हूँ कि यू नेवर फॉरगेट इन लाइफ। ये एलिप्टिकल कर दिया मैंने। अब क्या है, इस सेक्शन से आप फंस जाओगे, आप टेढ़े होके निकल सकते हो। तो इफ यू टर्न अराउंड, तो आपका सपोज बॉटल इधर फंस रहा है, आपने थोड़ा टर्न किया, इधर आपको एरिया बड़ा मिल गया, सो यू कैन पास थ्रू। अब क्लियर है सबको कि नहीं है? यस इज सर, इट क्लियर। क्लियर? अब तो भूलोगे नहीं ना कि चीफ ऑफिसर बन जाओ फिर बोलोगे कैडेट को फाइंड आउट। अब तो नहीं भूलना चाहिए आपको, अब इतना डाल दिया नहीं। इंफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट लेना तो लेकर रख लो, जहाज में कोई समझाएगा नहीं आपको। सर वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहे हैं सर। वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कई बार वीडियो देखने के पता लगेगा ना किधर देखना है, कौन सा वीडियो देखना है, वो भी याद नहीं रहेगा। कितने वीडियो देखोगे, वही चक्कर है, चक्कर हो जाएगा ना, कौन सा नंबर पे किधर पढ़ाया, किधर बताया, वो चक्कर हो जाएगा। हाँ। चलो अब आगे करें। ये अब आपकी कंसेप्ट क्लियर चाहिए मुझे। आई वांट योर कंसेप्ट टू बी क्लियर। आप लोग क्या है कि आधे कंसेप्ट लेके जाते हो जहाज पे, पढ़ाई एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, हाफ कंसेप्ट लेके जाते हो, उसके बाद जो पढ़ाई कराते हो। क्योंकि इतनी शर्म की बात है कि अभी जो कैडेट्स आए हैं अप्रैल बैच में, उनको पूछा भाई वो स्ट्रेक क्या है, वो सब कहते हैं सर वो फिश प्लेट है। मैंने उनको बोला किसने बोला, कह रहा चीफ ऑफिसर ने बोला। बताओ यार, कितने चीफ ऑफिसर को समझाऊं क्या कि फिश प्लेट नहीं है, कि चीफ ऑफिसर का कान पकड़ लूं। इनफैक्ट मास्टर भी वो फिश प्लेट लेके बैठे हैं, है शेयर स्टेक। तो आप लोगों के फंडे क्लियर करता हूँ, जहाज में जाके आप उल्टा बोलते हो, कैडेट को उल्टा सिखा देते हो, वो बेचारा सारी जिंदगी वही लेके बैठा होता है। अब वो जब चीफ ऑफिसर बनता है, कहता है मेरे को बेवकूफ बनाया, मैं भी सबको बेवकूफ बनाऊंगा। तो वो भी कैडेट को यही सिखा देता है, क्योंकि उसको चीफ ऑफिसर ने यही बोला था। तो वो चीफ ऑफिसर को जब चीफ ऑफिसर बन जाता है, वो भी यही बोलता है। तो बेटा आप लोग फिर पूरी मैरीटाइम कम्युनिटी को गड़बड़ कर देते हो विथ योर हाफ नॉलेज।
इसीलिए आई वांट योर नॉलेज टू बी कंप्लीट। नहीं तो मैं इतनी डिटेल में क्यों पढ़ाऊं, मैं शुरू हो जाता है आपके मिडशिप सेक्शन और बोल देता समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा, उसमें मेरे को क्या तकलीफ है। बट बाद में तो वही पूछा जाएगा पढ़ाया किसने, कौन था पढ़ाने वाला। अब ये आपके सर हमारा ग्राफिकल फॉर्म नहीं मालूम था पूरी शिप पे। नहीं, अब तो मालूम हो रहा है ना, अब तो समझ आ रहा है ना। मैं तो ये नहीं करता कि भाई हो गया कोर्स खत्म, अब मैं आपको वीडियो लगा दो आप समझते रहो अपने आप, ऐसा तो मैं नहीं करता। आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश तो कर रहा हूं, ये नहीं छोड़ दिया अपने आप पे भी कर लो, पढ़ लो, नोट भेज दिया, हो गया, सेल्फ स्टडी कर लो, चलेगा। चलो आगे करते हैं। तो ये बेसिकली आपके सॉलिड प्लेट फ्लोर हैं। और ये जो कट्स लगे भाई किसके लिए लगे, चलो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये कट क्यों लगे भाई, वाई द कट्स आर हियर, इसे क्या करेंगे, कट से क्या करेंगे, ये कट क्यों लगे। सर लॉन्गिट्यूडनल इससे पास करेंगे। हाँ बस फेब्रवरी बैच इसमें को तो से मालूम है भाई, उन्होंने तो वीडियो देखा है 3 बार, उनको तो पता ही है। तो लॉन्जिट्यूडनल इसमें पास करेंगे। अब ये ब्रैकेट्स आपके लग गए, और ये ब्रैकेट फ्लोर के ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेट फ्लोर अलग से दिखा दूंगा आपको ब्रैकेट फ्लोर क्या होता है। ये लॉन्जिट्यूडनल बॉटम लॉन्जिट्यूड लग गए, ये वाले these will, ये आपके इंटरकॉस्टल गर्डर आ गए, these जो ऊपर से गए उसको कहते हैं इनर बॉटम लॉन्जिट्यूडनल, एक तो बॉटम से एक इनर बॉटम। these are intercostal side girders which are going which are providing longitudinal strength to the ship along with longitudinal। अभी जो लगा है ये स्टिफनर लगे हैं इसमें, जो येलो येलो लगा है दैट द स्टिफनर विच इज कनेक्टेड टू द सॉलिड प्लेट फ्लोर। यहां एक प्लेट लगी है, इसको कहते हैं मार्जिन प्लेट। तो मार्जिन प्लेट क्या है, देखो आपके ये एग्जाम ब्लू में वाली जो लास्ट ना येलो वाली इधर लगी है, ये लगी है, येलो वाली दिख रही है कुछ पतली सी लाइन, हाँ वो ब्लू वाली आपके उसमें ब्लू वाली दिख रही है। देख ब्लू के इधर में एक और लाइन लगी है येलो वाली यहाँ, ये तो ब्लू है ना, ये येलो वाली ये यहाँ सब लगी है ब्रैकेट के नीचे। ओके सर, लास्ट में बहुत हल्की सी दिख रही है। ओके सर। हाँ हल्की सी है एंड में देखो, इसलिए रोक दिया मैंने दिखाने के लिए, ये येलो यस वाली सर, लगी, यस सर। इसको कहते हैं मार्जिन प्लेट। और मार्जिन प्लेट आपको अलग से दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार आपके ओरल में पूछ लेगा मार्जिन लाइन और मार्जिन प्लेट में फर्क क्या है, फिर आपकी बैंड बच जाएगी। मार्जिन लाइन पता है क्या है, व्हाट इज मार्जिन लाइन, वो भी नहीं पता। स्टेबिलिटी बेटा पढ़ा दिया अभी आपको, टनेज पढ़ा दिया, मार्जिन लाइन पढ़ाया है, फिर भूल गए, अभी पढ़ाया। सर मार्जिन लाइन वो जब कोई भी कंपार्टमेंट फ्लड होता है तो उस सर फ्लडिंग होने के बाद 76 mm बिलो द डेक लाइन। हाँ दैट इज इमेजिनरी लाइन, यस सर, 76 समझ नहीं मिलीमीटर बिलो। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि मार्जिन लाइन क्यों उसका नाम मार्जिन लाइन है, वो पूरा समझाया था, फिर आप लोग भूल भाल जाते हो। डैमेज स्टेबिलिटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छा बेसिक्स पढ़ा हो तो ओरल पास करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो ओरल बिकम्स इजी। तुम कितना रट्टा मारोगे, कहाँ कहाँ से उठा के पूछ ले कुछ पता नहीं। अगर आपको पूछ लिया मार्जिन लाइन मार्जिन प्लेट में डिफरेंस क्या, तो छुट्टी होगी आपकी।
ये प्लेट जो यहाँ लगी है ना नीचे, ब्रैकेट के नीचे यहाँ फ्लोर के साथ कनेक्टेड है, ये होती है मार्जिन प्लेट। ये वाली प्लेट, ये येलो वाली, ये वाली प्लेट होती है। इस टाइप की ऐसी प्लेट लगी होती है बिलो योर ब्रैकेट। यहाँ फ्रेम कनेक्टेड है, यहाँ फ्लोर है। मार्जिन प्लेट का काम क्या है कि कुछ भी झटका लगा, आपने लोड किया कुछ जोर से, बॉटम आपके टैंक टॉप पे लगा, तो सारे स्ट्रेसेस जो हैं वो फैल जाएंगे। कैसे फैलेंगे? मार्जिन प्लेट पे आ जाएगा स्ट्रेस, मार्जिन प्लेट से सारे प्लेट फ्लोर्स में स्ट्रेस फैल जाएगा। तो उस स्ट्रेस, जहां उस लोकलाइज स्ट्रेस हुआ, उस एरिया में क्रैक नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस फैल जाएगा। अगर वो फैल नहीं सकता था तो उस एरिया में क्रैक हो जाएगा। एक तो मार्जिन प्लेट सारे फ्लोर्स को कनेक्ट करती है, फिर यहाँ से टैंक साइड ब्रैकेट में कनेक्ट करती है और फ्रेम पे कनेक्ट करती है, यहाँ से हल पे चला जाएगा और यहाँ से बाकी फ्लोर्स में चला जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू सेव योर cracking in case of heavy load falling there, because you're going to spread your stresses throughout. ये आपके साइड में होते हैं फ्रेम्स, ये वाले फ्रेम होते हैं, ये ब्रैकेट है, ये आपके प्लेट फ्लोर है, ये गर्डर है, और ये सॉलिड वाटर टाइट फ्लोर है जो रेड वाला आपने देखा था, और ये वाली मार्जिन प्लेट है ऐसे लगी हुई है, और ये वाला ब्रैकेट फ्लोर है। इसमें ये आपकी मार्जिन प्लेट है, ये ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट लगा, और यहाँ बार लगा, और ये एंगल स्ट्रट लगे होते हैं। ये आपके गर्डर पे स्टिफनर लगा है। अब इसको हम मोड़ देते हैं, उसको फ्लैंजिंग कहते हैं। बट क्यों मोड़ते हैं? ब्रैकेट को हमने मोड़ दिया, क्यों मोड़ा? क्या रीजन? वेल्ड क्यों नहीं किया? क्यों फ्लैंजिंग किया हमने? क्या जरूरत थी इसको फ्लैंज करने की? कोई तो रीजन होगा ना। तो स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, बिकॉज बेल्डिंग करेंगे तो फिर बेल्ट क्रैक हो सकता है। हाँ, बेंड करने से जो टैंक टॉप है उसके ऊपर एक पिलर सपोर्ट आ जाएगा, तो अगर हमने वेल्ड किया होता तो क्रैक कर जाता। तो राइट आंसर। So we continue with the video. ये ब्रैकेट फ्लोर सेंटर लाइन गर्डर वाले आ गए हैं। ये सेंटर लाइन आ गया ब्लू, दिस इज अबव योर कील। अब ये जो है फ्रेम लगे हैं टू द हल, ये बीम्स आ गए ट्विन डेक के बीम्स, और ये रैकिंग स्ट्रेस के लिए बीम नहीं लगी है। रैकिंग स्ट्रेस आपको पढ़ा है, आई थिंक स्टेबिलिटी में पढ़ा रहे हैं अभी। जब आप रोल करते हैं तो रैकिंग स्ट्रेस होता है। दीज आर द वेब फ्रेम्स व्हिच आर कनेक्टेड ऑन टॉप, द येलो ones, and the beam is connected here to compensate your racking stress. These are your beams, deck beams. Blue ones are your deck longitudinals. The deck plating. फेब्रुवरी बैच, ये बताओ ये क्या प्लेट है? फेब्रुवरी बैच को तो मालूम है, फेब्रुवरी बैच नहीं, अप्रैल बैच बताएगा ये क्या है। अप्रैल बैच ये क्या चीज है? shear strake. हाँ, shear strake है, करेक्ट बोला। दिस इज अ shear strake, नॉट फिश प्लेट। हैच कोमिंग आ गई आपकी। ट्विन डेक, ट्रांसवर्स बल्कहेड, टैंक टॉप।
So this connects the whole thing. और यहाँ जो है ऊपर में हरे वाले, these are hatch combing supports. और यहाँ कट लगे होते हैं, देखा है क्या जहाज पे? यस सर। तो क्या कहते हैं कट को? कट का नाम है कट भी डिसकंटिन्यूटी वाला है, स्ट्रेस को लिए है, क्योंकि राइट एंगल पे आएगा तो क्रैक हो जाएगा। उसका नाम है स्कैलप, SCALLOPS, स्कैलप्स, छेद जो बनाए हैं उसमें। दैट इज फॉर रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द पॉइंट्स, नहीं तो कोई लोड पड़ेगा तो वहां क्रैक हो जाएगा। ये वीडियो का रिपीट देखना, भी 3 मिनट है, रिपीट लगा देते हैं आपको। हाँ सर, रिपीट कर दीजिए। मैं बोलूंगा नहीं, अपने आप देखना। हाँ सर, बस रिपीट कर। ठीक है। So now we'll have a break. Okay. So next class we'll start with your general cargo, midship sections. ओके सर। Okay. जी।